Hello students, welcome to my channel. In last video of discussion we have discussed some metals and we found out that metals are not found in the nature in the free state, but they are formed in the combined state with other element, right? Today our topic of discussion is how to extract pure metal from its ore. So taking the example of aluminium ore, right? And how will we find out the exact pure metal from its ore? Whoa. Let's start with the discussion. Corundum, These are the ores of represented by the aluminium. formula Al2O3, and cryolite with the formula Na3AlF6. Bauxite is the principal ore of aluminium. The extraction of aluminium from bauxite involves 3 steps. First, the purification of bauxite using Bayer's process. Next, the electrolytic reduction of anhydrous Al2O3 by Hall and Herold's process. The last step is the purification of impure aluminium by Hope's process. The first step in the extraction of aluminium is the purification of bauxite through a process called Bayer's process. This process is named after Austrian chemist Carl Bayer, who invented and developed the method to supply alumina for the textile industry. Iron oxide is present as an impurity in bauxite. In Bayer's process, this iron oxide is removed by treatment of bauxite with sodium hydroxide solution. Purification of bauxite involves 3 steps. In the first step, aluminium oxide is allowed to react with sodium hydroxide to form sodium meta-aluminate. This is sodium meta-aluminate. Note down the point. Sodium meta-aluminate. In your copy, you have to write the exact formula and their name, chemical name. In the second step, sodium meta-aluminate is diluted with water to form aluminium hydroxide. In the third step, aluminium hydroxide is heated strongly to form aluminium oxide. Right. तो जो आपका पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट बाय बेयर्स प्रोसेस. तो बेयर प्रोसेस में 3 स्टेप हमने लगाया यहाँ पे. कैसे किया? पहले हमने एल्यूमिना लिया. एल्यूमिनिया जो कि आपका बॉक्साइट है, राइट. Al2O3, दिस इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. पहले आपको ये बना. सेकंड स्टेप में आप इसी की रिएक्शन वाटर से कराएंगे. फिर थर्ड स्टेप में जो बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे हम लोग? इसको सीधे सीधे हीट करेंगे. पहले हमने क्या किया? सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया तो मेटाएल्यूमिनेट बना. उसके बाद हमने वाटर से डाइल्यूट करा, उसके बाद सीधे हीट कर दिया. तो हीट करने के बाद आपको क्या मिला? Al2O3 वापस, राइट. पानी अलग हो गया. अब आगे देखेंगे प्रोसेस. नेक्स्ट है इसका स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. पहला प्रोसेस हो गया बेयर्स प्रोसेस. नेक्स्ट स्टेप है हमारा. The second step in the extraction of aluminium is the electrolytic reduction of alumina obtained using Bayer's process. बेयर्स में जो एल्यूमिनियम मिला This is उसकी done through इलेक्ट्रोलाइसिस Hall करेंगे. and Herold's process. Hall and Herold developed the process independently. The electrolytic cell used in this process has the following components: an iron tank lined on the inside with carbon, which acts as the cathode, a series of carbon rods that act as the anode, alumina Al2O3 as the electrolyte. इस टैंक में ये जो है वो एल्यूमिना भरा हुआ है, यानी कि ये Al2O3 लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है. ठीक, यही आपका इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा. ये टैंक खुद में खुद किस फॉर्म में आ रहा है? ये कैथोड बना रहा है, और जो ये कार्बन रॉड डाली वो एनोड बना रहा है. ठीक है, पॉइंट्स को प्रॉपर्ली देखेंगे, आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना है. Fluorspar and cryolite are mixed with the electrolyte to increase its electrical conduct. अब ध्यान से देखें, इस पूरे सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ्लोरोस्पार मिलाया है. फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला यहाँ पे देख लें. CaF2 क्या लिखेंगे? CaF2 ये होता है कैल्शियम फ्लोराइड. क्रायोलाइट भी आप जानते हैं और एल्यूमिना भी आप जानते हैं. तो फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट और एल्यूमिना, यानी कि एल्यूमिना के साथ साथ हमने 2 केमिकल और मिलाया यहाँ पर, ताकि इसकी इलेक्ट्रिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, कंडक्शन बढ़ जाए. and decrease the fusion temperature.
In the electrolytic process, electricity is passed through the electrolytic cell. करंट फ्लो हो रही है. Sodium, aluminium, and calcium ions migrate towards cathode. अंडरस्टूड है. कैथोड तरफ जाएंगे. The aluminium ions discharged at the cathode sink to the bottom of the tank and are periodically tapped off. उनको निकाल लिया जाता The है. oxide ions हो जाएगा. lose electrons and form oxygen atoms at the anode. समझ में आ रहा है ना. प्लस की तरफ माइनस चार्ज आता है, माइनस की तरफ प्लस चार्ज आता है. ये एक इंटरेक्शन होता है, राइट. तो जिसको आप बोल रहे हैं कैथोड की तरफ कौन जा रहा है, प्लस वाले जा रहे हैं, क्योंकि कैथोड क्या है, निगेटिव चार्ज है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, निगेटिव जाएगा. अब आप रिएक्शन को प्रॉपर्ली देखेंगे, आपको ये फॉर्मूला ये प्रॉपर्ली देखना है. जितना भी लेफ्ट हैंड साइड बना है और राइट हैंड साइड जितना भी कंटेंट बना है आपको कॉपी में बताना है. ये आपका होमवर्क भी है, इसे याद रखेंगे प्रॉपर्ली. The oxygen atoms combine and form oxygen molecules. The metal obtained after Hall and Herold's process is about 98% pure. नोट द पॉइंट. 90% प्योर मिल This गया. needs to be purified further. The third step is purification of the electrolyzed output from Hall and Herold's process. This is done by using a cell developed by Hoop. Therefore, the process is called Hoop's process. Hoop's Third cell step. consists of an iron tank lined at the base with carbon, 3 layers of molten aluminium with different densities to prevent their mixing. The upper layer of the electrolyte cell consists of pure molten aluminium with a series of carbon rods that serve as the cathode. The middle layer or the लिक्विड फॉर्म में एल्यूमिनियम जो आपको मिला है, इसके जस्ट पहले वाले सेकंड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिसिस करने पर उसको यहाँ मोल्टन फॉर्म में पहले लेयर में रखा गया है. इसे ध्यान देंगे. electrolyte layer consists of a molten mixture of sodium, barium, and aluminium fluorides. सेकंड लेयर देखें. The third layer is the bottom layer. Along with the carbon lining, it acts as the anode for the electrolytic cell. The bottom layer contains impure molten aluminium obtained from Hall and Herold's process. Using this cell, aluminium is purified in 4 steps. Electricity is passed through Hoop's cell. Aluminium ions from the middle layer reach the top layer and get discharged. Aluminium ions collect at cathode as pure aluminium. At the same time, an equal amount of aluminium from the bottom layer, that is, the anode layer, moves to the middle layer. In this process, 99.98% pure aluminium is obtained. तो फाइनली हुप्स प्रोसेस जो कि आपका थर्ड स्टेप है, यहाँ पे आपको 99.98% यानी अप्रॉक्सीमेटली 100% प्योर एल्यूमिनियम फाइंड हो जाती है. इस पूरी रिएक्शन को देखेंगे, यानी कि तीनों स्टेप आपको दिखाने हैं मुझे होमवर्क में. Aluminium is used in a wide range of products, from chocolate wrappers to sophisticated एक पॉइंट आप समझ लें, एल्यूमिनियम आपकी अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कोई रस्टिंग नहीं होती है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ है, ये हल्का एक मेटल है जिसको कई जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशंस में. airplanes. Let's take a look at some of its common uses. Aluminium is widely used in the manufacture of automobile components because of its strength and relatively lighter weight. In the construction process due to its high tensile strength. In the manufacture of electric wires due to its high conductivity. For the packing of medicines and pharmaceutical products due to its malleable nature. In the manufacture of soft drink cans and espresso coffee makers because it does not rust and is relatively less toxic in nature. In the manufacture of kitchen utensils because aluminium is a good conductor of heat. Extracted aluminium in combination with other metals like copper, manganese, magnesium form alloys. An alloy, 2 or more than 2 metals can be molten and combined in a shape is called an alloy.
अलॉय जो होता है किसी इंडिविजुअल मेटल से, जो अलॉय बनता है इन सबके मिक्सचर की वजह से, याद रखेंगे एल्यूमिनियम ज़्यादा है, आपने कॉपर मैग्नीशियम मिला दिया है, अब जो अलॉय बनता है इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, समझ गए, इंडिविजुअल मेटल से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला और ज़्यादा पावरफुल होगा, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो अलॉय बनता है काफ़ी हल्का ही बन जाता है। Is a homogeneous mixture of solid solution of two or more metals or metals with non-metals. Duralumon is a light and tensile alloy of aluminium. Note the point. Duralumon is composed of 95% of aluminium, 4% of copper, 0.5% of manganese, and 0.5% of magnesium. Let us look at some of the common uses of Duralumon. Duralumon is widely used in the aircraft industry. This is because of its lightness and other desirable physical properties. It is also used in making pressure cookers to withstand high temperatures. Magnesium is an alloy of aluminium and magnesium. Although weak and soft in elemental state, magnesium combines with aluminium to produce some alloys that are useful in engineering materials. Magnesium is composed of 85% of aluminium and 15% of magnesium. Magnesium is used in the making of balances because of its high structural strength and resistance to corrosion. It is also used in the making of optical instruments like cameras and microscopes due to its light weight